ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। ये जो है डिक्टेशन, इंग्लिश डिक्टेशन क्लास है एसएससी के लिए, DSSB के लिए, DRDO के लिए, DDA के लिए, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो जितने भी सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं, जिनमें भी जैसे डिक्टेशन, जो इंग्लिश डिक्टेशन आती है, ये उन सब के लिए इम्पोर्टेंट डिक्टेशन है। ये कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन नंबर 235 है। और ये जो है सारी की सारी डिक्टेशन, इससे पहले की जो है सारी डिक्टेशन, जैसे इसकी इम्पोर्टेंट डिक्टेशंस, लीगल डिक्टेशंस, वो जो है आप लिख करके टाइप करके अपनी एक्यूरेसी जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है, ये जो जैसे यूट्यूब का नाम है, सेंटर का नाम है ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज .com लगा दो बस, ये हमारी वेबसाइट है। उस पर आप जा करके लाल कलर के बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेनो का कोर्स लीजिए, मंथली पैकेज लीजिए। माई कोर्सेज के अंदर जैसे केसी लिखना है, मतलब केसी कैलाश चंद्रा लिखनी तो केसी पे क्लिक कीजिए, तो उसमें ऊपर वीडियो होगी, नीचे PDF होगी, उससे नीचे जैसे ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होगा, तो वहाँ जाकर आप टाइप कर सकते हो। लीगल में जाना है तो इंग्लिश लीगल डिक्टेशन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको डिक्टेशन मिल जाएंगी, वहाँ से आप लिख सकते हैं, PDF देख सकते हैं और जो है नीचे जाके टाइप कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी देख सकते हैं। इसी तरह से बेसिक से पढ़ना है तो फैब 80 WPM के नाम से कोर्स होगा, वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हैं और जो है मतलब क्या कहते हैं बेसिक अपना कर सकते हैं। और वहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर है, यानी कि जब आप जो है ट्रांसक्रिप्शन पे पहुँच जाते हो तो वहाँ जा कर के ट्रांसक्रिप्शन करना होगा और जितनी बार बताया गया उतनी बार ही करना होगा। तो जो है आपका जो बेसिक जो है वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा और आप जो है 1 महीने बाद ही ये जो डिक्टेशंस हैं कैलाश चंद्रा वगैरह की, ये लिखना स्टार्ट कर देंगे। और जो है जैसे मतलब ये नए बच्चे हैं जो लाइव क्लास के फ्री जो जैसे हम दे रहे हैं, वो 2 बजे से स्टार्ट होगी, 7 अगस्त से स्टार्ट होगी, तो उस क्लास को जैसे ज्वाइन कर सकते हैं। 2023 के लिए आपका कोई भी एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट का है, जैसे SSC का है, तो SSC स्पेशल है वैसे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कैलाश चंद्रा डिक्टेशन नंबर 235। और जो बच्चे जैसे डिक्टेशन करते हैं और नए बच्चों को जैसे मतलब क्या कहते हैं जिनके मैथ अच्छे हैं, सॉरी मैथ अच्छे नहीं हैं और क्या कहते हैं इंग्लिश अच्छी है और वो आपसे शॉर्ट हैंड की सलाह लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं इस क्लास के बारे में बताएं और जो है उस क्लास के साथ, उस सेशन के साथ शुरू से जोड़ दें, जिससे जो है उनका जब रिटर्न जब अच्छा निकले तो वो जब हमारे पास आएँ या जैसे घर से करें तो वहीं से टेस्ट को क्लियर कर पाएँ। Dictation start after 5 seconds. When the house rose last evening, I was in the midst of an argument concerning the propriety of exempting government companies from the provisions of company law. I wish to make it clear that where government owns 100% of the shares in a company, obviously many of the rules applicable to ordinary companies cannot be applied. Indeed, the well-known authority on modern company law summarized the position thus: it will be appreciated that the absence of shares and shareholders automatically renders large and import branches of company law totally inapplicable. Rules relating to the raising and maintenance of share capital, the control of directors by members, protection of minority shareholders, company meetings and the like can have no relevance. As we have said earlier, the knotty problem of the relationship between the management and the members is solved by the abolition of the latter. But the approach of our joint committee to this problem is difficult to appreciate. Government companies are put in a peculiarly privileged position. Last night I happened to peruse the minutes of the 14th meeting of the joint committee which considered this question.
The recommendations submitted by the Finance Ministry miss the point. There have been exemptions suggested for certain types of companies, but I do not think that any purpose will be served by having any of the government companies other than those in which government has 100% shares brought within the purview of the exemption clause at all. We have to bear in mind that a government company in which 51% of the shares are held by the government is not a company which is the exclusive property of the government. It is one in which the government has a technical majority holding of the shares, and in theory the government, according to the provisions of the shares, and in theory the government, according to the provisions of the bill, is given powers to revoke all the safeguards provided in the company's bill. Let me read out briefly the particular section which covers these exemptions. I want to ask only a few questions of those who have taken a prominent part in the deliberation of the joint committee. What is it that you seek to achieve by granting such an exemption? The government can, if it deems necessary, cheerfully decide one fine morning to exceed the overall limit of managerial remuneration laid down in clause 190. Of course, such a dispensation will be said to be in the national interest, and we would then have to reconcile ourselves to this change. Under clause 234, government has to entertain complaints from shareholders, but exemption from this provision can be made. Government companies, after all, are run by people of virtue. How can we ever entertain any complaint against government directors? Indeed, the blanket power that has been given confers on the executive full and complete authority to dispense with any or all the provisions of the Companies Act, except two provisions to which specific reference is made. Of course, the argument would be put forward that government would not be unreasonable, that it will not exercise these powers. I fail to understand the validity of this argument. If you do not choose to exercise these powers, then why should Parliament give these powers to people who might not use them at some future date? After all, a statute is in existence until it is amended, and at any moment changes can occur. Someday a rash finance minister might come to this house and dispense with all these elaborate safeguards which are meant to protect the interests of shareholders. I think it is morally unjust and constitutionally improper to confer these blanket powers on government. Have the legal consequences of such powers being given been examined? I have grave doubts whether this particular provision is in conformity with Article 14 of our Constitution. We have, after all, a written Constitution which assures equal protection under law. On what grounds of legality can we distinguish between shareholders in a government company and shareholders in a private company? I believe the courts would have something to say on this classification of
categories which has been attempted by the joint committee. How can we strip them of their rights? The shareholders have already been stripped of their virtues by the government, which does not trust them, and now we are called upon to deprive them of their rights to government companies. Even in a corporation, state corporation, although it is true that shareholders have limited rights where an infringement of the statutory powers by the corporation occurs, or where there is an infringement of their rights, the aggrieved individuals have a right to go to courts of law. Under this peculiar provision, if it is held to be valid, it will mean that the government, if it is so wants, can deprive shareholders of all their rights. It is in the fitness of things that the shareholders should be given a fair deal in future. ये जो मैंने डिक्टेशन आपको पढ़ी है लगभग 100 प्लस की स्पीड थी। इसको पहले अच्छे से लिखें, लिखने के बाद जो है इसको टाइप ज़रूर करें। टाइपिंग के बाद जो है जो आपकी एक्यूरेसी आती है उस पर काम करें, आउटलाइंस जो नहीं बनी है उस पर काम करें, और क्या कहते हैं जो स्पेलिंग एरर हुए हैं उस पर ध्यान दें, और जो है क्या कहते हैं आउटलाइंस एरर जो है उस पर काम करना है। दूसरा स्पेलिंग एरर है उस पर काम करना है। तीसरा जो है अगर आपने जो है लाइन विस वगैरह कर दी है तो भी लाइन टू लाइन जो है अच्छे से पढ़ें, जिससे जो है आप जो है एक्यूरेसी जो है बहुत बेहतरीन कर पाएँ। इस क्लास के अंदर इतना ही बच्चों। नमस्कार बच्चों।